नमस्कार, वेलकम टू श्रीकाया एकेडमी। आमर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करने कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे। वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर सीबीएसई आईसीएसई ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स क्लास 1 to class 10 and we provide classes for all subjects including English and spoken English. So last class रे आमे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विषय पढ़ी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स विषय आम यहाँ पढ़ी कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। एज द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड they are called as autotrophic nutrition consuming bodies. As animals do not prepare their own food, they are called as heterotrophs because they are dependent on other animals for their food or they are dependent on other plants for their food. And in last class also we have studied about photosynthesis, the food making process and food making mechanism of the plants. आज क्लास रे हमें photosynthesis विषय एवं other parts of this chapter को cover करिबा। So food making process in plants is called as photosynthesis. So underline the word photosynthesis जहाँ कहा जाए food making process in the plants. And आज हम last class रे पढ़ी the kitchen of the plants is called as leaves of the plants माने गछर पत्र माने तार kitchen भलिया काम करती. So leaves are the food factories of the plants or the kitchen of the plants. Therefore all the raw materials must reach the leaf. So पत्र को आमको सबु जगह raw materials such as water, minerals, sunlight, everything, any minerals that are found in soil, everything हमको पहुँच जाएगा पड़े to the leaves of the plant. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. So केमिति सेटा पत्र पाखरे पहुँचे because they are absorbed by the soil and soil is the main source to make those substances available to the leaves of the plants. So as seen in the book एठी human cells विषय रे किछटा रिप्रेजेंट करिछि. सेल्स ह्यूमन बॉडी रे भी थाए, प्लांट्स बॉडी रे भी थाए. बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. एठी हमें देखि परिबा लिखाई छी कि bodies of living organisms are made of teeny units called as cells. हम प्लांट्स रो बॉडी की भी जदि छोट छोट भाग करिबा बा ताकू भाग करिकी देखिबा ताले हम पाइबा कि प्लांट्स रो बॉडीज और एनिमल्स रो बॉडीज बा ह्यूमन बीइंग्स रो बॉडीज एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो बॉडीज छोट छोट सेल्स मानकु नै तयारी हेते. सो द टीनी यूनिट्स आर कॉल्ड एज सेल्स. And the cells can be seen only under the microscopes. आज गुड़ाक बहुत छोट छोट ही था गुड़ाक आमको खाली आखिर विजिबल हुअंती नहीं. सो आम ये सबको केमिति देखि परिबा ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. एठी सेल रो चित्र बही रे रिप्रेजेंट हेछि. तो एवरी सेल हैज इट्स न्यूक्लियस. The center part of the cell is called as nucleus. And the other parts are called as cytoplasm and the outer part is called as cell membrane. So, इधर already लिखा है जी कि the cell is enclosed by a thin outer boundary which is called as cell membrane. As shown in the picture, it is called as cell membrane. The most cells have a distinct
and centrally located spherical structure called as nucleus. जहाँ मु कहली cells मानकर center रे गोटे nucleus थाए तो center point of the cell is called as nucleus. भल भाव आप पिक्चर एटा को देखि पारथिबे what is called as nucleus. The center part of every cell is called as nucleus and the outer layer is called as cell membrane. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance which is called as cytoplasm. जेपरिक आपण चित्र रे देखि पारछंती सेल रो तीनटा पार्ट विषय रे रिप्रेजेंट कराई छी. गोटे होची न्यूक्लियस, another one is cytoplasm, another one is cell membrane. One is nucleus, another one is cytoplasm and the third one is cell membrane. So the jelly-like substance is called as cytoplasm. The center part of the cell is called as nucleus and the outer layer which is thin is called as cell membrane. So को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी सेल्स को नहीं की तैयारी करा जाय थाए एंड सेल्स रो तीनटा पार्ट विषय रे रिप्रेजेंट करा गला. नाउ आमे पुनी थरे प्लांट्स केमिति खाद्य ऑब्जर्व करंती से विषय जानिया पई सेठी को रिटर्न आस जिबा आज आमे सेल रो स्ट्रक्चर विषय जानि गले. The tiny pores present on the surface of the leaves, which pores are surrounded by guard cells and such pores are called as stomata. So it represent करा है जी कि गच्छर जो पत्र थाए leaves of the plants थाए से leaves of the plants रे tiny pores थांती जहाँ साहाଯ୍य रे पत्र खाद्य तैयारी करे गच्छ पानक पे. And those pores are surrounded by guard cells. Guard cells माने जेमिति कि गोटे जिनस को प्रोटेक्शन देवा पई किछु गोटे घर को प्रोटेक्शन देवा पई गार्ड र आवश्यकता थाए सेमिति लिप्स मानकर जो टिनी पोर्स थाए से मानको प्रोटेक्शन देवा पई हमको गार्ड सेल्स र आवश्यकता थाए. सो गछर पत्र रे सेल्स गुडाक गार्ड सेल्स गुडाक प्रेजेंट थाए सो दैट ताकू गोटे काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जोगे दिया जाय परिबो सो दैट गछटा बंचिकी रहिबो और तापे खाद्य तैयारी हो परिबो एंड गछ से खाइबाटा को एब्जॉर्ब करि परिबो एंड सच पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमाटा. सो यू कैन मेक ए नोट्स मु जो पॉइंट्स डाकुची सेगुडा को कंसीडर कर यू कैन मेक ए नोट. सो सच पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमाटा. So the question is how water and the minerals absorbed by the roots reach the leaves. So आगुरा में पढ़िले कि plant absorbs all the minerals from the soil and through roots those minerals water reaches the pores of the leaves where food is prepared for the plant so that we can see the plant's life. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. So, gachar roots, soil ru sabu minerals and particles and water jaha bhi darkar thae need thae gach mananga pai se sabu ko absorb kariki through stem, branches और leaves को पठांती. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. So they are called as vessels. गोटे pipe kind of vessels थाए जोटा कि root रू leaf को connect करता है and from the roots leaf पर्यंत से सब खाइबा गुड़ाक पहुँची थाए through roots. So सब बेले कहते कि गच्छर roots बा चेर सबुठ important जिनस होता है because चेर द्वारा ही सब important जिनस and important पार्टिकल्स जहाँ दरकार पड़े गच्छपाई खाइबा तैयारी करिया पाई सेउडाक सब गच्छर पत्र पाखरे रिच करा जाए. सो दे आर कॉल्ड एज वेसल्स. So now the question is why the leaves have the capacity to make the food and other parts of the plants do not have that much capacity to synthesize food for the
plants. कहीं पत्र ही केवल खाद्य तैयारी करि पारे आउ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स खाद्य तैयारी करि पारंते नै लाइक स्टेम भी अछि तार रूट्स भी अच्छी तार ब्रांचेस भी अच्छी बट से माने खाद्य तैयारी करि पारंतनी ओनली लीव्स से खाद्यटा को तैयारी करि पारंती. द क्वेश्चन इज व्हाई. So the answer is the leaves have a green pigment called as chlorophyll. पत्र गुड़ाक जो नेली देखा जाए ग्रीन कलर देखा जाए so green pigment type which is called as chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. We all know that the sun is the basic source of energy for all the living organisms and for everybody who are sustaining in this world. सो सनलाइटा जमती कि पानी आउ सॉइल आउ मिनरल्स दरकार गछपाई सो खाइबा रोषेई करने जमती आमको गोटे प्रकार जालेनी दरकार पड़े फ्यूल आवश्यकता थाए लाइक आमे एलपीजी सिलिंडर्स यूज करूँ किए हीटर यूज करती किए इंडक्शन कुकर्स यूज करती घरे रोषेई करने सो लाइक दैट लीव्स मानक भी गछ मानक खाइबा तैयारी करने एनर्जी आवश्यकता थाए सो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द सनलाइट सो इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट एंड दिस एनर्जी ऑफ द सनलाइट इज यूज्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फॉर द प्लांट जोटा को कहा जाए फोटोसिंथेसिस. So, कौन कौन रहिला मेन इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स सॉइल सनलाइट सो ये सब जिनस गुड़ाक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हेल्पफुल होता है. Since the synthesis of the food occurs in the presence of the sunlight, so it is called as photosynthesis. So underline the word photosynthesis. As sunlight is used as a fuel here, so the word is called as photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine. Combination of carbon dioxide, water, various kind of minerals which are extracted from the soil, food is prepared for the plants. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. And it is a very unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of the food so that we find the plants alive. Thus, the sun is the ultimate source of the energy for all the living organisms. It I already aguru kahi sarchi. So, the basic source of the energy for everybody who are living in this earth is the sunlight. Now, the question is, can you imagine a life on the earth in the absence of the photosynthesis? Then the answer will be simply no, because plants माने निजर खाइबा निजे बनाती आमे माने खाद्य पे plants and other animals को ऊपर निर्भर करू. So, if photosynthesis हबनी, that means world रे आउ प्लांट रहिबे नहीं. जदि प्लांट रहिबे नहीं जहाँकटू आमे खाद्य पाउचु से सोर्सटा ही रहिबनी तो आमे अर्थ रे सस्टेन करबा लगभग इम्पॉसिबल हो जिवो. सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. सो विदाउट फूड वी कैनॉट सस्टेन इन दिस वर्ल्ड. The survival of almost all the living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of the plants. And another point is that oxygen is also provided by plants. Some percentage of the oxygen is also provided by plants. गच्छ आमको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी आउ ऑक्सीजन प्रोवाइड करे. So plant is very very necessary for our survival in this earth. So beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants. जेमती कि green stems, green branches. The desert plants have
scale or spine-like leaves to reduce the loss of the water by transpiration. And these plants have green stems which carry out photosynthesis. So desert বা মরুভূমিরে କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଭ୍ ସେଠି ନଥାଏ ସେଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ସ ତାଙ୍କର ୱାଟରକୁ ଆବଜର୍ବ କରିକି ରଖନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସନଲାଇଟ୍ର ୟୁଜ୍ରେ ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି. So they have scale or spine like leaves. ଗୋଟେ different kind of leaves ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗଛମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ ମରୁଭୂମିରେ. And these plants have green stems which carry out photosynthesis. So another question is photosynthesis green leaves रे हुए आ जो ଜାଗାରେ green leaves ହେଇପାରେନି like desert ସେ ଜାଗାରେ green stems ରେ ଆଉ green branches ରେ photosynthesis କରାଯାଏ ଆଉ plants ମାନେ alive ରହିପାରନ୍ତି. And ତାଙ୍କର leaves ଗୁଡ଼ାକ special category leaves ଥାଏ like spine like leaves ଥାଏ. Scale or spine like leaves. You have to underline these words. ओडिशारे सबुठु बेस्ट क्लासेस पाई जॉइन करंतु श्रीकाया एकेडमी. आमर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पाई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. आमर लोकेशन न्यू एजी कॉलोनी पोखरीपुर भुवनेश्वर. आमर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन क्लासेस को जॉइन करबा पाई कॉल करंतु 8114789448 नंबर रे. एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल श्रीकाया एकेडमी. एंड आम चैनल को नेक्स्ट वीडियो पाई सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग.